framework, GTU has acquired 5-star status among the top 10 universities. It has been first in Gujarat and second in the country among 450 universities to upload the students' credit data on AGC portal. Besides many other awards by Economic Times, India Today, Times of India, one of them being Gold Award for Excellence in the Global Collaboration. I congratulate all the 38,928 students and 146 gold medal winners who will receive their degrees at this convocation. To strengthen the entrepreneurship ecosystem, the best startup incubator at GTU will also get a gold medal today. In this convocation, 22,928 undergraduate degrees, 4,702 master's degrees, 70 doctoral degrees and 10,797 diplomas will be awarded. To give a brief on the reforms that GTU has undertaken in the last year, we have revised the entire credit framework in all the 40 branches of undergraduate, 47 postgraduate and 42 diploma engineering according to the National Credit Framework of NEP 2020, starting academic year 24-25. The revision of curriculum in engineering, management, computer applications, applied sciences has been done to make them industry-oriented, multidisciplinary, skills integrated, flexible, and enabling self-paced learning, besides a much wider international exposure. Specific weightage has been given to make our graduates more rounded, socially sensitive, and equipped for learning future skills. Besides the core courses, students can pick professional electives from a large basket of industry-defined courses. An example in case is the elective that we have started offering in semiconductors by Micron. AI and other deep tech courses are now being offered to completely different domains through multidisciplinary open professional electives. Real-time industry workplace skills are integrated starting as early as semester 4 and stretching right up to the final 8th semester of internship in industry. Besides this, we have the essence of Indian knowledge system, universal human values, professional communication and ethics, sports and yoga, which open up avenues for students to develop their strengths as holistic, technically sound and yet sensitive professionals. Instead of the mandatory classroom electives, students now have the choice to take up many electives from the online MOOCs prescribed by our boards of studies. This gives them scope to complete their electives at their own pace and utilize their time on or off campus to get hands-on training through projects. Multiple entry, multiple exit options are now available to all. Meritorious students can now apply for PhD directly after 4 years of BE to pursue their research potential. On the digital front, GTU has been a pioneer in the country in digitizing all its internal processes, and we are not satisfied by that. We are going a notch higher, and under the Academic Bank of Credit, GTU has registered more than 3.65 lakh students, more than 40.71 lakh academic records have been uploaded in DigiLocker. Students can now share their digital certificates directly with companies and international universities as GTU authenticated versions. The Government of India has encouraged us by taking us into other pilot projects such as e-payments and gateways. Our website and portals are AI enabled now with our friendly chatbot GTU Sarthi, which can guide you through all the numerous initiatives, reforms and guidelines, circulars and any other information that you seek. With the launch of our online MBA in International Business on the ODE platform of UGC, we are opening up many avenues for working professionals and dual degree modes. GTU has turned around its entire focus on skills in its regular as well as customized programs. Going beyond the classroom's boundaries, we have launched GTU Shyama Prasad Mukherjee Center for Lifelong Learning and Industry Skills. This center is envisaged as a hub for all skills programs in emerging areas, including by DST and GKS funds from Government of Gujarat, and as many as 1537 students have already completed the SBT. GTU also offers over and above its regular courses, joint programs in terms of minors and honors. Our institutions offer 24 courses in 24 branches in the emerging areas of AI, ML, data science, autonomous electric vehicles, additive manufacturing, cyber security, robotics, green technology, sustainability engineering and smart cities.
The university itself also offers minors and honors which are industry-led in association with leading industry partners like Maruti Suzuki, L&T, TCS, Infosys Springboard for our UG students. Elective courses on semiconductors are also given in association with Micron directly from Taiwan. We have many programs for working professionals, a very unique joint diploma in mechanical manufacturing technology in collaboration with Toyota. All these are through 35 MOUs with leading industry partners and industry associations. What do we have in the pipeline for 2025? Many collaborations on deep tech, AI, semiconductor and EV. GTU has launched 45 high-end technical courses integrated with equivalent credits in its curriculum itself, provided by leading industry partners like AWS, L&T, IBM, TCS in emerging deep tech. 500 students are already scouting SMEs at Rajkot, Naroda and other manufacturing hubs of the state in collaboration with Intel USA to give AI-based solutions in manufacturing through the Intel AI for Manufacturing program. GTU will offer 1200 online courses to students with L&T EduTech through the Digital 101 NASCOM program with the College Center by NITI Aayog, Sector Agnostic Technology Business Incubator by DST Government of India, Design Innovation Council DIC by the Ministry of Education Government of India, AICT Idea Lab, Community Innovation and Co-Creation Center to look into community-based engagement and problem solving. Our IP Facilitation Center is a huge hub for patenting. It also prepares certified patent agents. Thus, GTU Ventures provides innovation support, incubation programs, skill development, research and development, startup mentorship, financial support, infrastructure support, networking opportunities, legal and compliance assistance to our startups. As a result, the major outcomes are GTU holds 168 patents granted, which are for the startups that are incubated as well as through our PhD scholars. 6 technologies are already transferred. 25 crores of funding assistance has been given to the startups so far. This has resulted into our startups earning revenue being generated to the tune of 114 crore plus. The cumulative valuation of these startups stands at 261 crore plus. These startups are already generating employment, and to this date we have 4,128 individuals who are employed by our startups. We have 306 DPIIT registered startups. The major advantage of GTU Ventures is we have regional centers at 8 centers, and we can so reach out to the farthest and the most rural areas. GTU's Dharohar Center for Indian Knowledge is very active. We are offering, as of now, 23 courses in the Indian knowledge system. Under the AICTE Regional Language Scheme, GTU has been the foremost in the country in translating books into Gujarati. 81 books have been translated and uploaded already in eGov portal. Amongst our affiliated institutions, 36 affiliated institutions are accredited by NBA in a total of 86 courses. We have 6 autonomous institutions and more coming in. Thus, GTU has consistently driven its efforts with substantial outcomes in multidisciplinary, flexible, self-paced, skill-integrated and holistic curriculum for academic excellence, industry-ready and skilled workforce opportunities, research, innovation and sustainability opportunities, internationalization, Indian knowledge system, sports and yoga. It has been mentioned in our Gita that जब भी आपने धर्म को हृदयस्थ कर दिया है, तो उस धर्म के परिप्रेक्ष्य से जो निर्णय लेते हैं वो सुखाकारी से बना लेते हैं। GTU ने अपने स्टूडेंट्स के लिए उनका सुखाकारी जीवन करने का एक धर्म हमने अपनाया है, और इस चीज़ में we are very grateful, our heartfelt gratitude to each one who has contributed to making 2024 a game changer. Starting with our Mahamay Governor Shri, our Mantri Shri, at the helm of affairs, our ACS and CTE technical education, and the entire GTU team led by the registrar,
our esteemed members of the Board of Governors, Academic Council, Research Council, Finance Committee, as well as the Deans, Associate Deans, members of the Board of Studies, Advisory Committees, GTU alumni, and countless other supporters. Thank you. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai. धन्यवाद. Thank you very much, Dr. Saurabh N. Pandya, Engineering અને ટેકનોલોજીના ડીન. અને હવે હું સાદર નિમંત્રિત કરું છું ડૉક્ટર તૃપ્તિ એસ અલમોલા, મેનેજમેન્ટના ડીન. नमस्कार. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए मैनेजमेंट के उम्मीदवार के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टाइम, Master of Business Administration Integrated, Bachelor of Business Administration as a part of 5-year Integrated MBA, Bachelor of Hotel Management and Catering Technology. नमस्कार. डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री के लिए कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवार के साथ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए पार्ट ऑफ 5-year इंटीग्रेटेड MCA की डिग्री के उम्मीदवार कृपया खड़े हो जाए. महामहिम कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवार के साथ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए पार्ट ऑफ 5-year इंटीग्रेटेड MCA के सभी उम्मीदवारों को डिग्री के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. इन्होंने शोध व परीक्षण के माध्यम से डिग्री लेने की योग्यता प्राप्त की है. मैं इन्हें डिग्री प्रदान करने का अनुरोध करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि उन उम्मीदवारों को भी डिग्री प्राप्त करने की संस्तुति की जाए जो अनुपस्थित है. धन्यवाद. मास्टर ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और MA हिंदू स्टडीज की डिग्री के उम्मीदवार कृपया खड़े हो जाए. महामहिम कुलाधिपति महोदय, मैं मास्टर ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और MA हिंदू स्टडीज के सभी उम्मीदवारों को डिग्री के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. इन्होंने शोध व परीक्षण के माध्यम से डिग्री लेने की योग्यता प्राप्त की है. मैं इन्हें डिग्री प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ और यह भी अनुरोध करता हूँ कि उन उम्मीदवारों को भी डिग्री प्राप्त करने की संस्तुति की जाए जो अनुपस्थित है. धन्यवाद. विविध विद्या शाखाओं के अध्यक्षों या प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए प्रस्तावों को स्वीकार करके आप संबंधित उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान करने की संस्तुति करता हूं. मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में वाणी, व्यवहार और कर्म से अपने आप को इसके योग्य साबित करेंगे. मैं उन सभी उम्मीदवारों को भी डिग्री प्रदान करने पर सहमति प्रदान करता हूं जो इस समय अनुपस्थित हैं. And is currently a member of the Executive Committee of Management of L&T, an advisor to the Chairman and Managing Director for L&T's Engineering and System, and conduct business. He is the alumni of IIT Mumbai, having pursued MTech in 1978. Let's give him a heartfelt welcome and look forward to drawing inspiration from his words. Namaskar. Most Honorable Governor of Gujarat State, learned Honorable Minister of Higher and Technical Education, Shri Rishikesh Patel ji,
Dr. Rajul Gajjar, Vice Chancellor of GTU, Srimati Sunaina Tomar, Additional Chief Secretary, Higher and Technical Education, Dr. K.N. Kher, Registrar, GTU, and distinguished most honorable members of the Board of Governors, Academic Council, Finance Committee, Deans, Associate Deans, Honorable Professors, distinguished guests, and aspiring professionals in large numbers that I see in front of me. GTU is completing 18 years of its existence, and this is an age in my mind to become major. When we use that word major, it gives a sense of youth, vigor, dynamism, fearlessness, and this is all needed to make this country a modern India. From India to Bharat is the journey we are all on, and for that Bharat, Vikasit Bharat, this 18th year of this university and the 14th convocation will feed in enormous amount of talent, and this talent will take this nation forward. It is my utmost honor to deliver the 14th convocation address at GTU. I am delighted to learn from the Vice Chancellor that 38,928 students will receive their degrees, 70 scholars are receiving their PhDs, 146 of them who outperform will receive gold medals, and that includes one startup who obviously must have done wonderfully well. Samuchit Jnana Samanvay. When we talk of this phrase, it actually connotes accumulating appropriate knowledge. All these three words are extremely important. It is not just the knowledge, but the appropriate knowledge and accumulating that which makes one behave, perform, and act differently in our lifetimes. I am deeply impressed with this kind of tagline of Gujarat Technical University, which actually epitomizes in the form of innovation, inclusivity, excellence, and especially aligning its goal to the new National Policy of Education 2020. When we look at where we are today, it is always important to see where we have been, and history is an amazing teacher. It is also important to know about our history as a nation, because it is that tells us how to avoid mistakes, recognizing different kind of patterns in our existence, understanding one's deeper roots, foster respect for our diversity and culture that Bharat epitomizes about, and with all that we are today bearing, know that where exactly we are, because we have come from a great civilization and we have a duty to see that this civilization continues and goes forward. I seek Acharya Devratji's permission to speak about a bit of India's history. He is far more learned than me on this matter. This is what India was. 2000 years back, India had an amazing level of its own dominance in the world. And this dominance is known by that 25 to 30% of the global GDP used to come from India. I thought it could be an appropriate theme to speak today that this is the India which we inherited. This is the India which we were in terms of
where India existed. Over the years, we started gradually reducing our dominance in the world, and then, of course, as the slide shows, we got into colonization, the exploitation that followed with the colonization, the partition that came in. From 25% less than 300 years back, we came down to 4% of the global GDP. And over the first 40-50 years of our independence, we came down to 1%. Now this is the history of India that I believe every young mind must know. This is the part of that history which everyone needs to know. And today, when we talk of 2024, we are at roughly 4% with a clear target to achieve what we were 200 years back, to reach 15% of where we want to be. Remember those 250 years back when India used to be called Sone Ki Chidiya. And from that Sone Ki Chidiya to the poverty that we saw in this country, this is essentially where each and every of this youth and young mind needs to commit and work for. I'll take you a little forward, and this is exactly what we see over 2000 years. I showed you a story of 200 years, 250 years. This is a story of 2000 years. 30% of global GDP came out of India, and you can see on the slide where US was and where India was. We were at the top of the bracket on the left side, and then where we are today as compared to where US was. India has been fortunate that we have a great leadership who is guiding us and taking us very firmly on this path of development. And this development, as I said, 2047, when we are 100, we hope to be that 15 billion. I did back this slide to connecting this ancient history to Gujarat. It is extremely important to know that there was a Harappan era, and in the Harappan era, there was a place in Gujarat called Lothal. Lothal did shipbuilding, and shipbuilding connected the innovative minds in this part of the country to do trade right across the world. From this region, we dominated the world's commerce, and this is essentially where we started seeing how India progressed. So this progress of India, prehistoric time, and then before 2,500 years back, this is what India was all about. And from these era to the Surat, from those days of Harappan civilization to Bharuch, and from Bharuch to Surat was the journey of this particular region. And from this region, we have seen in the medieval times, Surat emerged as the biggest of the port, and from there, largest ships started getting constructed because goods were getting transported from India, money was flowing in, and this is where India's wealth actually came about. So this is a region which essentially is extremely fertile about it. Gradually over the years and the British colonization gradually saw that Surat lost its prominence to Mumbai. Wood was replaced by steel. That's what the British brought in to make sure that our artisans here cannot function and perform. And this is essentially where the fall of India began. Those days, if one sees a ship which is built 210 years back, still working and functional, and that is what you see on this slide. And I wanted to bring this picture up to show
that the artisans of Gujarat and the skill that existed in this particular place moved to Mumbai in the form of what Wadia started. The Wadia shipbuilding created INS Trincomalee. Today it's of course HMS Trincomalee, but the Her Majesty's ship or the His Majesty's ship Trincomalee is 208 years old, still functions, built right in Mumbai from the skills that came out of Surat. Now this is essentially becomes extremely important that we not only can do things, we can do things better than anybody else in the world, and that's some confidence with which I would like to see today's youth going forward. The next slide actually shows you how Indian economy behaved from that 47 when we got our independence to where we are today, and how rapidly one is moving on in terms of growth. And this obviously means this is a country of opportunities. As our Honorable Prime Minister says, this is India's century. This is India's journey taking the whole world forward, and in that, the one who is going to lead is the demographic dividend, which I see in large numbers in front of me. Obviously, when we start doing any such things, it is important to see where our economy is. We have seen bad times, we have seen not so bad times, and now is time to truly do something great. So you see an enormous amount of service sector boom, you see a startup economy, you see an economic liberalization that came in little before, and with all that, we have also seen states performing amazingly different than many others. The Gujarat that laid India in the, let's say, hundreds and hundreds years back, now actually contributes quite significantly in the form of what we see as entrepreneurial spirit. The same entrepreneurial spirit 2,500 years back, which led the whole world. The favorable policies for all of you who are going to be doing, being on your own feet and start being entrepreneurs, this is a great time of opportunity. There's availability of energy, there's availability of transportation network, renewable energy, multiple industrial hubs, and this is an ecosystem which then only looks for talent. This is time for the talent to start taking an ownership and start delivering. What has this state done over decades? Today we see among the highest concentration of petrochemicals and chemicals, textiles, automobiles, renewable energy, ports, agriculture, and the diamond value addition. World, more than 80% diamonds pass through this place. This is what this state actually does. Substantially large percentage of what happens in India comes from this state. I'll rush through the next few slides in the interest of time. The key drivers towards this is obviously the modern India that we all keep talking about, or the Vikasit Bharat we keep talking about, with demographic dividend, manufacturing, sustainable development, innovation, global trade, and all that. Now, what does it take to make great organizations? You all today who are graduating, post-graduating will get into either starting on your own, standing on your own feet, work for somebody, or join an industry, or trade, or education, or any of those kind of things. What is that you are going to be looking at? I'm just flashing through. The equity and equality, pictorially, how beautifully shown. Innovation, customer. Every relationship has a customer and a supplier. Keep that in mind. Digital transformation. The most digitally transformed nation in the world today is Bharat. Find your passions. Look for opportunities. Celebrate your early successes.
make your own commitments, not only to yourself, your own success, but for the country's success. Work very, very hard. And of course, to succeed in your vision, you must have single-minded devotion to your journey. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your inspiring and valuable words. તો જૂની આપણી પુરાણી ખેતીને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ એવા આદરણીય રાજ્યપાલ દેવવ્રતજી, યુનિવર્સિટીના વીસી રાજુલબેન, હાયર એજ્યુકેશન અને ટેકનિકલ એજ્યુકેશનના એસીએસ બેન શ્રી સુનૈના તોમરજી, જયંત પાટીલજી, રાજુભાઈ શાહ, ડોક્ટર કે.એન. ખેર, બોર્ડ ઓફ મેમ્બરના સૌ સભ્યો, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના સભ્યો, ડીન્સ, પ્રોફેસર્સ અને સૌ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો પદવીદાન સમારંભ, આ દીક્ષાંત સમારંભ દીક્ષાની સાથે શિક્ષાનો અંત નથી લાવતો, પરંતુ તમે તમારા યુવાની કાળમાં જ્યારે અભ્યાસ પૂર્ણ કરી સમાજ જીવનમાં તમે પદાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છો, એવા સમયે તમને મળેલી માહિતી, મળેલું જ્ઞાન, તમારા ગુરુજનોએ આપેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ હવેના સમયની અંદર તમે તમારા કેરિયર માટે, સમાજ માટે, દેશ માટે અને હવે તો આ 21મી સદી છે અને 21મી સદી હોય એટલે સ્વાભાવિક 21મી સદીને ક્યુરિયોસિટીની સદી ગણાવી છે. 19મી સદી એટલે મનીની સદી, મની પાવર. 20મી સદી નોલેજ ને ઇન્ફોર્મેશનની સદી અને 21મી સદી જ્યારે દુનિયાની અંદર અનેક ક્રાંતિઓ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં જ્યારે આવી રહ્યા છે, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ 4 ચાલી રહી છે. પહેલા આપણે જે વિજ્ઞાનના સાહિત્યમાં અને ફિક્શન મૂવી જે સાયન્સની આપણે જોતા હતા, આજે હકીકત બની છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને રોબોટિક્સની વાત ભૂતકાળમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક મૂવીની અંદર જોઈ હતી, ક્યાંક વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યની અંદર એ ફિક્શન્સ નોવેલમાં વાંચી હતી, આજે હકીકત બનવા જઈ રહી છે. દુનિયા ખૂબ ઝડપથી ટેકનોલોજીના યુગમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. આપણા ત્યાં પણ ભૂતકાળની અંદર 1000 વર્ષનો તમે ગુલામી કાળ, જે આપણા ભારતનો અંધકાર કાળ હતો, એને જો વાત કરો તો આપણા ગૌરવશાળી વારસાઓ વેદ, પુરાણ, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા આજના આધુનિક યુગની વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી શોધના બુનિયાદ અને પ્રણેતા છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક પહેલા પેટન્ટની વ્યવસ્થાઓ નથી, વપરાશી હકોની વ્યવસ્થાઓ નહોતી અને આપણા શાસ્ત્રની અંદર અને આપણા સંસ્કૃતિની અંદર કોઈ પણ નવી બાબત ને બાંધવા વાળો વિચાર નહોતો. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના હતી. ગણિતનો પાયથાગોરસ તરીકે જાણીતો થિયરમ બૌદ્ધાયના ઋષિએ પાયથાગોરસના જન્મના 200 વર્ષ પહેલા શોધ્યો હતો. આ થિયરમ શુલ્ભા શાસ્ત્રમાં લખાયેલો છે. આજે પણ એ વાત એટલી જ હકીકત છે, પરંતુ આપણે દુનિયાની સામે મૂકીએ એ પહેલા પશ્ચિમના જે પણ વૈજ્ઞાનિકો, ગણિત શાસ્ત્રીઓ, એમને આપણી શોધેલી બાબતો, આપણે સૈદ્ધાંતિક રીતે સ્વીકારેલી બાબતો એ દુનિયા સમક્ષ મૂકી અને પરિણામે આ પેટન્ટની વ્યવસ્થા પણ એમના તરફથી આવી છે. આપણા ત્યાં તો વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના હતી, અમે કરેલું કામ સર્વને પ્રાપ્ત થાવ, એ પ્રકારની નીતિ હતી. હવે સમય પરિવર્તિત થઈ રહ્યો છે. આર્યભટ્ટ ઋષિએ માત્ર શૂન્ય જ નહીં, પરંતુ અંકશાસ્ત્ર, ભૂમિતિ, ગણિતની બીજી ઘણી મહત્વની બાબતોની પાયાની શોધ કરી છે.
કોમ્પ્યુટરમાં વપરાતી ડેસિમલ પદ્ધતિ પણ એમની જ શોધ હતી અને હજારો વર્ષ પહેલા ડેસિમલ પદ્ધતિ એમને આપણને બતાવી, દુનિયાને બતાવી. અને ગણિત શાસ્ત્રમાં પાયાની વાત પાઈ એની શોધ પણ આર્યભટ્ટે કરી હતી. હજારો પૂર્વ વર્ષે મહર્ષિ ભાસ્કર ગણિત અને ખગોળશાસ્ત્ર ઉપર લખાયેલા ગોળાધ્યાયના ચોથા ભાગમાં પૃથ્વી ગોળ છે બતાવ્યું હતું. એના વર્ષો પછી પૃથ્વી ગોળ છે એ થિયરીનો સ્વીકાર થયો. પ્રસાદ ભૌતિક શાસ્ત્ર ઉપર લખાયેલા લો ઓફ મોશનમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. ન્યૂટને તો વર્ષો પછી એક વાર્તા સફરજન પડ્યું અને ક્યુરિયોસિટી આ સફરજન નીચે જ કેમ પડ્યું, પરંતુ એ વાત મોશન લો એ આપણે વર્ષો પહેલા ગ્રેવિટી વાળી વાત આપણા શાસ્ત્રોમાં ઉપલબ્ધ હતી. એટોમિક ફિઝિક્સનો પાયો જોન ડેલ્ટને નહીં પરંતુ ગંધ ઋષિએ નાખ્યો હતો. આ બધી વાત હું એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે આવતા સમયની અંદર આખો જે સમય પરિવર્તિત થવાનો છે અને 21મી સદીમાં ખૂબ ઝડપથી દુનિયા સાથે આપણે દોડવું છે અને દુનિયા કરતાં પણ આગળ નીકળવાનો વિષય અને વિચાર વિકસિત દેશની શ્રેણીમાં હંમેશા રહ્યા, વિકાસશીલ દેશની શ્રેણીમાં રહ્યા. પરંતુ હવે ભારતે મન બનાવ્યું છે 1000 વર્ષનો જે અંધકારમય યુગ આપણી પાસે ગયો એ અંધકારમય યુગને ફરીથી સ્વર્ણિમ યુગમાં પરિવર્તન કરવાનું આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વપ્ન જોયું છે અને વિશ્વાસ રાખ્યો છે કોના ઉપર? આપ સૌ યુવાન યુવતીઓ ઉપર રાખ્યો છે. ભવિષ્ય એમને યુવાનોમાં જોયું છે, યુથમાં જોયું છે. 2047ની નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે વાત કરતા હોય એટલે એ સ્વર્ણિમ યુગ જોવાનું સૌભાગ્ય એ આપ સૌને પ્રાપ્ત થવાનું છે. સ્વર્ણિમ યુગ લાવવા માટેના गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की 14वें दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, ऊर्जावान विद्वान नेता आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयंत भाई पाटिल जी, निदेशक एवं उपाध्यक्ष LNT आदरणीय श्रीमती सुनैना तोमर जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गुजरात, इस यूनिवर्सिटी की कुलपति आदरणीय डॉक्टर राजुल गज्जर जी, कुल सचिव मान्य श्री डॉक्टर KN खेर जी, मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य श्री राजू भाई शाह जी, विभिन्न विद्या शाखाओं के अध्यक्ष, व्यवस्थापक समिति के सदस्य, फैकल्टी मेंबर्स, अभिभावकगण, पत्रकार बंधुओं, विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, आज सौभाग्य की बात है कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी GTU, जिसका 14वां कॉन्वोकेशन कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है और मेरे से पहले आदरणीय कुलपति महोदया ने, उन्हीं के साथ पाटिल साहब ने और अभी अंत में आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सुंदर सारगर्भित और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आप सब के लिए क्या उपदेश होने चाहिए उन सब की विस्तृत जानकारी दी। आपकी यूनिवर्सिटी थोड़े काल में कैसे प्रगति, विकास और उन्नति की ओर बढ़ रही है, उसने कितनी उपलब्धियां इस थोड़े काल में की है, इसके पीछे हमारी सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के व्यवस्थापक और छात्र छात्राओं का इसका पूरा का पूरा उन्हीं को श्रेय जाता है।
आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जी पाटिल साहब ने बहुत गंभीर और वो चर्चा की जो हम सबको प्रेरणा देने वाली है, भारत के अतीत गौरव का दर्शन कराने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो दीक्षांत समारोह होता है, ये बहुत गंभीर काल होता है। आपने कई कई वर्ष यहाँ पर पढ़ने में लगाए, गुरुजनों के सानिध्य में समय व्यतीत किया, आज आपको डिग्रियां मिल रही, इनको लेकर के आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे। गुरुओं ने आपके साथ जो परिश्रम किया है, उनकी भी आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। जिन माता पिता ने स्वयं अभावों में रहकर आपको इतनी बढ़िया शिक्षा दिलाई है, उन माता पिता की भी आपसे अपेक्षाएं हैं। जिस समाज का अन्न जल खाकर के हम बड़े हुए हैं, उस समाज की भी हमारे से अपेक्षाएं हैं। और जिस राष्ट्र के प्रति हमारा एक जिम्मेदार पूर्ण दायित्व होना चाहिए, वो राष्ट्र भी आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखे हुए हैं। आज का दिन आपको यूनिवर्सिटी द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक बनाकर के भेजने का, ऐसा व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और निष्ठा के साथ, पैशन और समर्पण के साथ वो काम करे जिससे आपके कुल का गौरव बढ़े, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और भारत का वैभव बढ़े। यदि आप इस डिग्री लेने के बाद इस प्रकार की सोच को लेकर के बाहर जाएंगे, तो आपके गुरुजन और यूनिवर्सिटी को भी बहुत बड़ा गौरव और गर्व होगा। हमें विश्वास है कि आप जितने भी युवा बेटे और बेटियां हैं, उन्होंने पिछले इन कुछ सालों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप को बहुत बड़ा बल दिया है। उन्होंने हर प्रकार की साइंस टेक्नोलॉजी को जीवन में अपनाकर आगे बढ़ने की बात कही है और इस दिशा में आप लोगों ने जो पहल की है, आदरणीय कुलपति महोदय ने जो जानकारियां हमारे बीच में रखी, इसके लिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी परिवार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पाटिल साहब ने और आदरणीय मंत्री जी ने भारत के जिस अतीत की बात की कि हम विश्व के गुरु भी थे और भारत सोने की चिड़िया भी था, ये कल्पना नहीं। पाटिल साहब ने उस कालखंड की बड़ी विस्तृत जानकारी हमारे बीच में दी। आप भारत का भविष्य, आप राष्ट्र का गौरव हैं। ऐसे समयों पर गंभीरता के साथ आपने अतीत से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने जीवन में स्वाभिमान का भाव पैदा हो। बहुत बड़ा कालखंड भारत में ऐसा आया जिसमें हमने लंबी गुलामी को सहन किया है। उस गुलामी के काल में हम इतने दबाव में चले गए कि हमें अपनी भाषा पे गर्व नहीं, हमें अपने पहनावे पे गर्व नहीं, हमें अपने खान पान पे गर्व नहीं, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं, हमें अपनी विरासत पे गर्व नहीं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आज भारत स्वतंत्र है। आप जैसे युवाओं ने इस घिसी पिटी कमजोर गुलामी की मानसिकता से कंप्लीट बाहर आने की जरूरत है। हमारे पूर्वज महान थे। हम विश्व में सारी दुनिया को विद्या प्रसारित करने वाले देश रहे। हमारे देश ने दुनिया को खाना, जीना और रहना सिखाया। बेटे और बेटियों, जिस समय यूरोप के लोग
जिनका आज हम अंधानुकरण करते हैं। जिस समय वो वल्कल वस्त्र पहनते थे, उस समय तो भारत की ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में बंद होता था। ये हमारी पहचान की दुनिया है। अभी आदरणीय पाटिल साहब ने बताया, भारत के समुद्री जहाज 1570 से लेकर 1700 काल का वो खंड जो स्वर्णिम काल था भारत का, भारत के समुद्री जहाज विश्व विख्यात थे। सारी दुनिया में भारत निर्यात करता था, यहाँ आयात नहीं होता था। हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। और तरीका क्या था भारत का, जो सोने की चिड़िया था। आप ये न सोचे यूं ही कहते, हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया, हमें गलत पढ़ाया गया, हम जैसे थे हमें वैसा नहीं बताया गया। प्यारे बेटे और बेटियों, प्रमाण देता हूं आपको, भारत के गांव-गांव के अंदर स्टार्टअप थे। उस काल में गांव-गांव के अंदर स्टार्टअप थे। वहां हर वर्ग के लोग एक गांव की इकाई में बसते थे। लोहार लोहे का काम करता था, स्वर्णकार सोने का काम करता था, कुंभकार बर्तन बनाने का काम करता था, लकड़ी का मिस्त्री लकड़ी के कारोबार करता था, जुलाहा वस्त्र बनाता था, नाई बाल काटता था। जीवन की जो जरूरत थी, चरमकार जूता बनाता था, जो जीवन की आवश्यकता है। इस देश के हर गांव के अंदर वो औद्योगिक इकाइयां लगी हुई थी और सब अपना अपना काम पूरा करते थे। किसान कृषि करता था और जहां गांव को जितनी जरूरत होती थी, आपस में आदान प्रदान करके अपनी बनाई हुई चीजों को अपनी जरूरत के अनुरूप रखता था और बाकी जो सामान बचता था गांव का, वो शहर के बड़े व्यापारी आते थे और उस सामान को जो सहकारिता विभाग बना इस रूप में वो उसको खरीदते थे और समुद्री जहाजों में डाल करके विश्व के कोने कोने पर निर्यात करते थे और उसके बदले में कागज के नोट नहीं लेते थे। इसके बदले में हमारे व्यापारी सोना लेते थे और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था। अब बोलो, इस देश का नाम क्या था? कमजोर विद्यार्थियों बोलो कुछ, अभी नहीं समझ में आई। इसलिए इस देश का नाम सोने की चिड़िया था। हमारा बिजनेस जो अभी बताया गया, भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ऊपर की जीडीपी थी। यहां 3 रुपया सारे विश्व में घूमता था तो 1 रुपया भारत का होता था और 2 रुपये में सारी दुनिया समाती थी। ये हमारा अतीत था। और जहां तक शिक्षा की बात है, इस देश के आदि सम्राट महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर कहा था, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। क्या कहा दुनिया के लोगों को, यदि साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, चरित्र की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बिस्तर बांध करके भारत की धरती पे आओ और यहाँ के गुरुजनों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करो। ये काल भारत का था, इसलिए हम विश्व गुरु भी रहे और धन की दृष्टि से दुनिया में सबसे संपन्न भी हम रहे। आज आप सब विद्यार्थी जिनको डिग्रियां मिल रही, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपके पूज्य माता पिता को भी बधाई देता हूँ और गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ, जिनके परिश्रम से, मेहनत से आप सबने आज डिग्रियां प्राप्त की है। इन डिग्रियों को लेकर
अंतिम एक बात मैं कहूँगा, आज हमारे पास सब कुछ हो रहा, बड़े बड़े भवन भी बन रहे हैं, गगनचुंबी, और आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत बड़ा आविष्कार किए। एक जमाना था जब प्रकाश करने के लिए आदमी मिट्टी का दिया जलाता था, जब यात्राओं को तय करने के लिए बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पर चढ़ता था, जिन यात्राओं को करने में महीनों लगते थे आज मिनट और घंटों में काम हो जाता है। आज आपने प्रकृति पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, जीवन मूल्यों की दृष्टि से यदि हम अपने अतीत महापुरुष ऋषियों की परंपरा को छोड़ जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी विकास बहुत लंबे समय सुख का साधन नहीं हो सकता। ये सुख देता, इसे इनकार नहीं है, लेकिन इसका सुख तभी ज्यादा होगा जब इंसान में अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, शौच हो, संतोष हो, तप हो, स्वाध्याय हो। ये जीवन के मरण जब तक नहीं होंगे यह मनुष्य को शांति नहीं दे सकते। भाइयों और बहनों, मैं कई बार सोचता हूं, ओसामा बिन लादेन के पास डिग्री छोटी नहीं थी, अपने समय का रावण भी कम पढ़ा लिखा नहीं था, कंस भी बहुत बलवान पढ़ा लिखा राजा था जिसने 400 राजाओं को बंदी बना करके रखा हुआ था। यदि इस विद्या की डिग्रियों के साथ मानवता, इंसानियत साथ चलती है तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और ये संसार भी सुखी होगा। यदि ये विचार नहीं होंगे तो फिर ये जो यूक्रेन और रूस में चल रहा है और अन्य देशों में जो इजराइल और फिलिस्तीन में अभियान चल रहा है, ये चलते रहेंगे और ये जीवन के सुख का आधार नहीं होता। जीवन के सुख का आधार मानवीय मूल्य है। हम प्राणी मात्र में अपने आप को देखने की योग्यता रखें, दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने की योग्यता रखें, दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करने की योग्यता पैदा करें। यदि ये मानव भाव है, इंसानियत है, सत्य और अहिंसा जीवन के ये परम तत्व मेरे और आपके पास है, तो हम एक बढ़िया समाज का निर्माण करेंगे। और प्राचीन भारत में भारत के गौरव का कारण यही था कि वो धनपति भी थे लेकिन अध्यात्मवादी भी थे। वो भौतिकवाद से विरोध नहीं करते थे, उसका भी पालन करते थे, लेकिन इंसानियत, मानवता और धर्म उनके जीवन का अभिन्न अंग था। आओ, आप जैसी युवा पीढ़ी जो राष्ट्र का गौरव है और जिस राष्ट्र के गौरव को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, निश्चित रूप से उनका ये संकल्प आप और आपकी आने वाली संततियों के लिए हम सब मिलकर के ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। और आज के दिन जिस तैत्तरीयोपनिषद का उपदेश गुरु दिया करता था उसमें 3-4 बातें होती थी, सत्यम व धर्मम च स्वाध्यायनमप्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश एष उपदेश, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इस देश के गुरु ये उपदेश देकर अपने विद्यार्थी को भेजते थे, बेटे जहां भी रहो सत्य का आचरण करना, जहां भी रहो धर्म का पालन करना, यानी कि कर्तव्य का पालन करना, अपनी विद्या को बढ़ाते रहना और बढ़ा करके अपने तक मत रखना, अपनी विद्या को मानवता के कल्याण के लिए,
विश्व की भलाई के लिए परिष्कृत करके बांटते रहे। आपकी ये विद्या सबका कल्याण करने वाली है। आपने अपनी टेक्नोलॉजी साइंस जो पढ़ी है, इसका विस्तार होता रहना चाहिए। और कितनी बड़ी उपमा उस समय के ऋषि जिन्होंने उपनिषदों में गाई थी, पर्जन्यो अभिवर्षतु, कि जैसे पर्जन्य कहते बादल को, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके उठाता और उसको वहां बरसाता जहां उसकी जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र में वर्षा होती रहे इसका कोई मतलब नहीं होता, मरुस्थल में वर्षा होती तो उसका मतलब होता। तो आप दुनिया के मरुस्थल को समाप्त करने का काम, आप अपनी विद्या को उनको बांटो जिनको उसकी जरूरत है। अपने देश को विकसित भारत बनाओ, अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाओ। हम पढ़ते लिखते, मेहनत हमारे गुरुजन करते हैं, धन हमारी सरकारें खर्च करती हैं और हमारी प्रतिभाएं विदेशों में चली जाती हैं। ये भाव अब कमजोर करने की जरूरत है। अब प्रतिभाओं के लिए भारत में प्लेटफार्म तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसी प्रतिभाएं जिनमें राष्ट्र का भाव पैदा है, वो अपने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आप यहीं पर अपनी सेवाएं देंगे तो ये राष्ट्र के प्रति आपका ऋण पूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। विमलेश कुमार, विष्णु प्रसाद, दीप शैलेश कुमार, मेहता कमलेश, योगेश जगदीश भाई, प्रजापति भावेश कुमार, दवे जसवंत कुमार, मोदी हर्षद कुमार। To the Honorable Minister Sri Hrishikesh Bhai Patel ji for your invaluable support and vision that continue to shape the future of education and empower institutions like ours. Our heartfelt appreciations goes to our Honorable Vice Chancellor Dr. R.K. Gajjar Madam for your esteemed, relentless efforts, unwavering leadership and commitment to academic excellence which have brought us to this proud milestone. To the esteemed members of the Board of Governors, thank you for your guidance, support and trust you place in these institutions. Your strategic vision has been instrumental in shaping the path of progress for Gujarat Technological University. To all the graduate students seated here today, heartiest congratulations. This is your day, a celebration of your hard work, perseverance and success. You are the pride of Gujarat Technological University and we wish you all the best as you step into the new horizon and pursue your dreams. To the proud parents and the families, thank you for your sacrifice, encouragement and unwavering belief in your children. Today's celebration is as much about your dedication as it is about your achievements. To the university officers, respected registrar sirs, faculty members and administrative staffs, your tireless efforts and commitment behind the scene have made this convocation a grand success. स्वप्न यह साकार करने संगठित हो, हिंद हमारा, हिंद हमारा, एज भावना सतत हो। डॉक्टर वर्षा पारेख अरे हरिद्वार गोस्वामी, आप नीरज हमान कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। करंटली ये गोल्ड मेडल बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के लिए मिला। कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। कितने साल का कोर्स था आपका? 3 साल का कोर्स था। अभी आगे क्या प्लान है आपका? अभी तो बस स्टार्टअप को ग्रो कराना है।
નમસ્કાર મેડમ. આજે ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી પદવીદાન સમારોહ આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપ શું મેસેજ આપવા માંગો છો? દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીને જેને આજે ડિગ્રીઝ મળી છે, અમુક જે બહુ જ મેરિટોરિયસ હતા એ લોકોને ગોલ્ડ મેડલ્સ મળ્યા છે, જે પીએચડી જે લોકોએ અર્ન કરેલી છે, એ આ એક યુનિવર્સિટીનું ગૌરવ છે. પરંતુ આને હજી આગળ લઈ જઈ અને વિશ્વકક્ષાએ આપણે જે વિકસિત ભારતની જે વાત કરીએ છીએ એમાં આ લોકોનું અવદાન ખૂબ રહેશે એ પ્રમાણેની આશા માત્ર યુનિવર્સિટીને નહીં, આપણા રાજ્ય અને આખા દેશમાં છે. એ લોકોને આ જ મેસેજ છે કે આ જ રીતે પ્રગતિ કરતા રહેજો અને બહુ જ કોન્ટ્રીબ્યુશન દુનિયાને આપણા તરફથી આપવાનું છે. ટેકનોલોજીકલી આપણે બહુ જ સાઉન્ડ છે, એને પણ આપણે જાળવી રાખવાનું છે, પણ સાથે સાથે સસ્ટેનેબિલિટીનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. જય हेलो, वी आर फ्रॉम मेक एंड ड्रीम और हम लोग स्टेम बेस्ड टॉयज़ बनाते हैं. तो बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के रिलेटेड जो टॉयज़ रहते हैं जिसमें हमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं उनको और प्लेफुल वे में हम बताते हैं. और जब भी बच्चा प्रैक्टिकल वे में उसको पढ़ता है तब वो और इजीली ग्रास्प कर पाता है. तो बेसिकली हमारा मोटो ये है कि लर्निंग इन अ फन वे. What have you made? What type of toys? They are all educational toys. They are all educational toys. For example, every kid plays with Beyblade, but they don't know what mechanism goes inside it. True. So we educate what mechanisms are inside it and what science concepts are used to make those toys. So जैसे इसमें rack and pinion joint लगता है, इसमें pull back mechanism लगता है, everything potential energy. You both of you are students of this university? No. No. We are incubated here. Achha, okay. Your startup project? Yeah. Since how long? 3 years. Oh, we are ready to go now with this? Yeah, we are already in the market. Okay. हेलो, माई सेल्फ जोशा कोडियाकर एंड आई एम द एल्यूमिनाई ऑफ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और हम यहाँ पे जीटीयू में इंक्यूबेटेड है. हमारा बेसिकली स्टार्टअप है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस स्टूडेंट की स्टडी को कैसे ज़्यादा एंगेजिंग पीरियड्स, उस स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बिल्डअप कर सके उसके बारे में हमने पूरा हमारा प्लेटफॉर्म रेडी किया, जहाँ पे AR/VR टेक्नोलॉजी से कोई भी कम से कम इजीली स्टूडेंट समझ सकते हैं और फैकल्टी उसको कम टाइम में समझा सकता है. आप ये देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी हमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन एनाटॉमी से, तो फॉर एग्जांपल फैकल्टी को रादर देन बुक्स में से समझाना, यहीं पे वो पूरा इंटरेक्टिव वे में क्या ब्रेन एनाटॉमी पूरी सिखा सकता है और फैकल्टी में स्टूडेंट अपने मोबाइल और लैपटॉप में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ये हमारा पूरा Is it restricted to science or all subjects? All subjects. साइंस, मेडिकल. तो आप टाई अप स्कूल से, कॉलेज से कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं. आप कब से हैं जीटीयू में ये इंक्यूबेशन कर रहे हैं? 24 months. 2024 में. अच्छा, ओके, लास्ट ईयर से. अभी कितना आपका रेडी टू गो है? हाँ, 1 वीक का हमारा रेडी है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो बोलते हैं. ओके. कॉलेज में टेस्टिंग चल ही रहा है. राइट, एक्सेलेंट. सर क्या नाम क्या रखा है आपने? क्यूरियो. ओके, दिस इज क्यूरियो. इसको हम स्टेम भी कर सकते हैं. मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा राय है और मैं पेक्थरा लेबोरेटरीज की फाउंडर हूँ. एंड हमने यहाँ पे कुछ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाए हैं. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो 30 to 40% केमिकल होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है. एंड इसीलिए हमने जो 30 to 40% जो केमिकल्स हैं उनको रिप्लेस करके अपना बायोमोलिक्यूल डिज़ाइन किया है, जो कि इस फॉर्मुलेशन में डाला है, जो कि हम पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं. एंड ये सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये इतने इफेक्टिव हैं कि आप जो है इसको हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और ये इजीली क्लीन हो जाता है.